माइक लेके कुछ बोल। एक मिनट, नाइस कुलचा। जल्दी बोलो, इतना धीरे धीरे बोलोगे तो मैं कट कर दूंगी आपको। Back to our room and Rohi, come Rohi, speak something. Okay. What did we do after Golden Temple is what we did. Hi everyone, welcome back to our channel. I'm Shivangi. I'm Rohit. And we are in Amritsar only for 2 days. Yes. We've come for a quick birthday trip and Golden Temple के दर्शन. हम लोग 11 बजे basically अमृतसर पहुंचे. उसके बाद जो हमने किया, I'm going to add that now. And now we are heading out. We are ready. अभी हम जा रहे हैं museum, market, whatever. That will take you along. So let's go. We have just landed in Amritsar and the first order of business is Amritsari kulcha. And we've come to Kulcha Land. It's come and it's looking yummy. It's so jam-packed. Rush here is insane and the taste is totally worth it. सारी जगह फुल है ये, सब जगह लोग ही लोग हैं. जी पीछे अंकल चाय बना रहे हैं. सॉरी. हाँ, कड़क. He's asking our preference की कैसी चाय चाहिए. पंजाबी वहाँ हमको पे सिर्फ समझ में लस्सी. तो आती है, बट इधर थोड़ी जो एकदम ठेठ पंजाबी बोलते हैं चाय पीने. एंड हम At a हमारे हिसाब Coca-Cola से stall. हम हमारे हिसाब से चाय बनवा रहे हैं यहाँ पे. लेट्स सी हाउ इट गोस. Basically, uncle is asking us कैसी चाय बनानी है. And बहुत ही काम स्वीट सा, एंड आज संडे है तो सारी दुकानें बंद है. चिल माहौल है. बहुत ही अच्छा सा सब कुछ है. Rocky काफी भैया ठंडी है. He's Rocky Bhaiya is our drive us through this trip. the Amritsar completely. We just checked into Courtyard by Marriott and I'm going to give you the room tour. There are a few cupboards over here and then there's a washroom this side. I really like how this is. And that's Rohi. Why are you hiding like that? Okay, so that's the room. And we have the blinder here, which Rohi will show us how. The view is not so stunning. The room is really good. So we have a full-time driver. तो उन्होंने अभी हमें घोड़े वाले चौक पे गाड़ी पार्क करके he has dropped us Partition Museum, which is keep walking from King Street, you'll find us. Just came out of the Partition Museum. We're like right outside right now, and It's quite sad to read the experiences people had during those partition times. Well described, but I think I've never been to a museum. Makes you realize what people have sacrificed for the freedom that we have today. Really need to have a really strong heart to be able to read everything. Very well described, very well put together. Whoever has put the efforts is insane amount of work done. And if you have the courage to see the pictures that's inside that actually happened during partition, then come here, because it was really difficult for us to be able to see that. Now we're walking from the museum towards the Jallianwala Bagh, and I don't know if you can hear, but there's like the temple is in the opposite, and we are in the Mall Road right now. And जो वहाँ पे कीर्तन हो रहा है गोल्डन टेम्पल में, उसका यहाँ पे हर जगह पे स्पीकर लगा हुआ है, and like you can hear it throughout the street, which is really nice. That's the Kala Ghoda, like you can see, and the whole street is called the Kala Ghoda Chowk. Or to adjacent to Kala Ghoda, you have this market called Dharam Singh Market, where you have a lot of eatery options. You also have a lot of shopping options. Basically, pick a lot of things if you want to buy for your friends and family from here. The opposite, there are like suit sets, fulkari dupattas, bags. We are at Jallianwala Bagh right now, and that's the well, the Shahidi well. And this is how the whole place looks like, and this is the significant wall in the whole Bagh, which basically has 28 marks of the bullets, and I'll show you the history of that. काफी शांति वाला माहौल है despite it being Sunday. much crowded. I don't know कितना usually crowd होता होगा, because हाँ मतलब there are so many people, but still like you can see ना बहुत शांति है.
We just came back to our room and Rohi had a huge surprise plan. Like I said, it's my birthday trip. And this is what I came back to. There's like a tall cake over there. I don't know if we're supposed to eat it. There's like a real cake inside there. It's not this much. हैदराबाद में ये सब मैं फुगा सकता फुगा सकता फुगाता ही हूँ जनरली फुला सकता बचपन से फुगाता बोलते हैं but the fact that they chose nice colors and they're not like bright bad colors, I am happy. I need to have dinner in the hotel only. It was included in our package basically, right? So whatever Mr. booked, the dinner was included, which is very rare because usually breakfast are included. So now we are back to hotel and having our dinner, and honestly the options are insane. Cheers. हम लोग रात के 10 बजे आए हैं एंड इट्स लुकिंग स्टनिंग. बहुत ही कम जगह, बहुत ही कम लोग हैं इस टाइम पे एंड वी जस्ट गोइंग इनसाइड. दिस इज आवर फर्स्ट ग्लिम्स. व्हाट्स अप गाइस, आज सुबह से हमें रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमको आज करना था और हम आराम से उठे बिकॉज वी डिडंट स्लीप यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे. अच्छा, जिस दिन हम आए उस दिन बेसिकली हम सोए नहीं बिकॉज हमारी 4 बजे की फ्लाइट थी. So we couldn't sleep. 2 o'clock we had to leave home and all those things, okay? But anyway, to get to today, we've had great darshan. सुबह में सब कुछ. पहली बात तो birthday breakfast was amazing. मतलब मेरिट का खाना literally बहुत अच्छा है. Especially breakfast is like really good. The opportunity to eat everything in breakfast is something else. From croissant to Amritsari kulcha और idli vada, मतलब सब कुछ था. Spread, the breakfast spread is just amazing. Then we went for darshan. We've had amazing darshan over there. It took about 2 hours. What's up guys? We are just done with our Golden Temple darshan. Actually हम लोग कल रात को भी आए थे but हमारे दर्शन नहीं हुए because Palki Sahib left by that time. And now we finally did our darshan and it was a wonderful experience. अंदर का बहुत कुछ record करना allowed नहीं है but we did whatever that we could. It was very peaceful. Must experience. It's an experience that only when you go is when you'll be able to experience it. Because हम कितना भी बोल लें, जब आप जाके जो फील होता है वो that can't be expressed in words. And it was pretty crowded and took about 2 hours for us to complete the darshan. But कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत प्यार से सब कुछ सबने करने दिया. So yeah, that was that and now we are just walking. अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या रोई बताएगा. हम कार में गए, we crashed, we slept. मेरा फोन बज रहा था. So it's my birthday today. Feb 9th is my birthday basically. पता नहीं वीडियो कब एडिट होके जाएगा. So हम लोग कार में थे and my phone was ringing and both of us were so sleepy. हम दोनों सो गए. It takes I think almost 45 minutes 50 minutes हमें लगता है मंदिर से वाघा बॉर्डर जाने में and हम लोग सो गए. We slept for almost 35 minutes in those 45 minutes and it was quick. मतलब हम जैसे पहुंचे उसी टाइम पे we reached around 4:30. और परेड शुरू होता है 4:30. Exactly. तो काफी लोग मतलब 2 घंटे पहले आते हैं. आपको चैट जीपीटी भी वही बोलेगा कि 2 घंटे पहले चले जाना. But yeah, हम लोग as always थोड़ा टाइम पे थे and it was good. मतलब काफी एनर्जेटिक माहौल था उधर, बहुत मजा भी आया and you could see Pakistan correct border दिख रहा था. वाघा बॉर्डर जो not connecting, parting India and Pakistan, तो वो देख सकते थे हम लोग वहाँ से. And the energy was something else. मैं तो जाग के देख रहा था because मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये सब चीजें. He is even trying to say कि यहाँ तक अगर border है तो फिर उधर तक क्या है. So many things, but overall, yeah. ठंडी मस्त है यहाँ पे, बहुत मस्त थी, मजा आ रहा था and energy levels crazy. जो हमारे BSF के persons थे were anchoring और hosting the facilitating thing, it was energetic, बहुत amazing था. And उसके बाद again we came back to hotel. We took some time off. We slept for again 30-40 minutes. Slept? When did we sleep after coming back? No, we were about to sleep फिर birthday calls आना चालू हो गए. Mentally I wanted
थोड़ा ब्रेक मिल जाए, बट नहीं मिला. एंड फिर अगेन हम गए नीचे, मस्त पहला डिनर के. आई हैड गुड फूड, शी वाज ओके, शी वाज नॉट having good time, headache and all I that. had headache, so yeah, I couldn't eat, but मैंने दाल चावल खाया, फिर उनसे चाय मंगवाया. But आज का spread was also, dinner spread was like massive. Honestly, जितनी भी जगह है उनके पास, सब जगह खाना था. मतलब जितनी भी जगह है to put food. And वहाँ पे हर जगह there was food, there was chaat, there were like so many options from like continental to Indian to Chinese. And अगर आप request करो so they can also Yeah, make. चाट. मैंने अपनी पीनट चाट बनवाया उनसे स्पेशल. अभी फिर से रात के दर्शन करने आए थे, and I'm gonna tell you all about it because it was something unexpected. वैसे मेरे सर पे ये जो mark है, this is because I was wearing that thing that you have to wear to cover hair. And मेरे पीछे अभी मंदिर है, and I wanted to show you that right opposite to the temple there's a milk shop जहाँ पे हमने कल दूध पिया था, which is amazing. That is the milk shop. I don't know what's the name. सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है, हमको पढ़नी नहीं आती. But that's the shop जहाँ पे गरम दूध बहुत अच्छा था. खाना पीना हो गया, सब ठीक है. उसके बाद अगेन वी वेंट टू So we basically wanted to do पालकी साहिब का जो प्रोसेशन होता है, we wanted to witness that. And कल रात को हम नहीं कर पाए, so that's the reason कल पूरा दिन हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि we thought we'll go in the we are anyway going in the night, तो तभी हम दर्शन भी करेंगे और पालकी साहिब भी देख लेंगे. Little did we know, and even internet and the driver that was driving us throughout told us that it happens around 10:30. 10 o'clock, okay, 10 o'clock. So we reached there around 9:50. जब तक basically सब कुछ हो चुका था. And today we reached on time. There was this lady, very sweet lady. We asked a lot of people basically कि कब होगा, कितने बजे होगा. Everybody had different information in the मंदिर. तो फाइनली हमको ये बंदी मिली, एंड वी वर जस्ट कंसिडरिंग कि हम एक बार दर्शन करके आते हैं, तब हमें ये बंदी मिली. एंड शी जस्ट सेड, एंड हमारे सामने लिटरली पालकी वाज फ्रंट ऑफ अस. आई एम गोना इंसर्ट द वीडियो सो यू गाइस कैन सी. पालकी वाज फ्रंट ऑफ अस, और ये दीदी ने हमको बोला कि आप लोग यहीं खड़े हो जाओ, यहीं से देखो. एंड इट्स लाइक वी आर लिटरली लाइक दिस, जैसे अभी हमारे सामने फोन रखा, पालकी साहिब हमारे सामने रखे हुए थे, एंड देन दे वर प्रिपेयरिंग सो, क्या बोलते हैं यार, एक स्मूथली, इतना प्यार से फटाफट काम कर रहे थे. हाँ, एंड मतलब इट वाज नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनलिज्म. वहाँ पे जिस तरीके से वो लोग बेडशीट लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर हर चीज पे इत्र डाल रहे हैं जल्दी जल्दी. इट वाज समथिंग एल्स टू एक्सपीरियंस. मतलब हमें ऐसा लगा कि दर्शन वाज वन थिंग, जहाँ पे एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आती है. यू फील इटर्नली पीसफुल, एंड यू नो इफ यू आर समवन हु cries happy tears and you don't know why you cry, then you also go through that emotion when you go to the temple. But जब हमने पालकी साहिब इतना पास से देखा, it was something else. We were like, हमें पता नहीं था कि हमें like we were just feeling like कि we've gotten more than we've asked for, because हम कल से इस चीज को ढूंढ रहे थे, और मुझे ये पता था कि सिर्फ आप जाते हुए देखते हो. But today we like पूरा कैसे बनता है, कैसे डेकोरेट करते हैं, एंड हाउ प्रोफेशनली दे डू इट. मतलब शिद्दत से, पूरी शिद्दत से वो लोग उसको पूरा सजाते हैं, और कहाँ क्या, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल बट द कोऑर्डिनेशन इज जस्ट समथिंग एल्स. इट वाज ब्यूटीफुल. एंड उसके बाद 10 मिनट के लिए फिर से दर्शन खुलते हैं, तो पहले हमने पूरा पालकी साहिब का प्रोसेस देखा. एंड ये सब होता है जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे, मंदिर का मेन एंट्रेंस के पास आप देखोगे, वहाँ पे पूरा पालकी रेडी होती है, उसको डेकोरेट किया जाता है. exactly at 9:30. Yeah, so better be around 9:15. 9 o'clock अगर चले गए तो you'll get the spot that we got, which is like literally in front of पालकी. एंड उसके बाद जब पालकी को लेके चले जाते हैं, विश्राम कराते हैं, उसके बाद लेफ्ट में, मतलब आपका जो मेन गेट रहेगा उसके लेफ्ट से देयर इज अ स्मॉल पैसेज, जहाँ से फिर से 10 मिनट के लिए सिर्फ दर्शन खुलते हैं. वो सिर्फ रात को ही खुलता है. दैट शुड बी अराउंड 9:45. सो वो भी दर्शन हमने किया, तो हमारे लिए इट वाज लाइक बैक टू बैक व्हाट वाज ब्लेसिंग. सरप्राइज. मतलब ये सब चीजें हमको पता नहीं थी, क्योंकि कैसा होता है, चैट जीपीटी, गूगल, एंड जो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूछ रहे थे, वो लोग हमें कुछ नहीं बता. मतलब दे वर जस्ट टेलिंग अस व्हाट दे न्यू कि 9:45 को होता है, और यहाँ खड़े हो जाइए, चले जाओ, इतने रुक जाओ, इतने बैठ जाओ, इतने से दिखेगा. they were like saying all these things, but exactly कब क्या कैसे होता है कोई भी नहीं पता. This one Farishta lady, she came, yeah, she told us, she was there, we wanted to thank her, she vanished just like a Farishta. Yeah. So yeah, it was a great birthday in short, and we
definitely got more than we expected. Okay, so we've just landed in Hyderabad, and the first thing that Rohi likes to do after coming to Hyderabad is have. Nilofer chai. If you've not tried it, you must. Because Rohi I is love it. fan of this. Yes. Alright guys, we're back to our city, Hyderabad, and it was a great 2-day trip. So we were basically there just for 48 hours. But अगर आपको सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाना है तो एक दिन भी बहुत है. You can take like the morning flight to go from here. I think सुबह का एक flight है, और but again the next day morning you have a flight. So like 24 hours is like enough. You can do everything from like morning darshan, langar, to evening darshan, and also Palki Sahib. Correct. So if you need any more details, tell us in the comments, and we'll give you the details. The only tip from my side would be to wear the most comfortable footwear, क्योंकि although we've had like the car all around, but वहाँ पे टुक टुक भी चलते हैं, but still कुछ भी अंदर तक जाना allowed नहीं है. Correct. And we were almost every day 15,000 steps तो minimum चला है हमने. Yeah. Okay, so see you next time. If you enjoyed this vlog, please give it a like, share, subscribe, and we'll see you. See you.